distinguished guests on the dais, Honorable Mr. Justice Ragappa Vijayanam, Honorable B. Balaji AOR, who has just delivered a very elaborate, lengthy, and beautiful lecture on the Evidence Act, and other distinguished guest, Justice Raj Kumar, I'd say, because I wish that he should go to the High Court. So instead of calling him as a judge, I would like to call him Justice. Mr. Augustine, and my dear brothers and sisters sitting in the auditorium, I would not like to go for teaching in this class. Reason being, law is such a vast subject that even if we take lives together, we cannot complete the teaching of law. So here what we should emphasize, how we should get the law, how we should get the knowledge. As Honorable Justice initially said, that the lawyer is the only community who knows every field of the law. I want to tell you why the word learned is only associated with an advocate and not with any other community. The reason is very simple, that you might have not heard learned doctor, learned engineer, learned CA, or learned anybody else except the learned advocate. Reason is obvious, that suppose one advocate is practicing in a field and he gets a case that some building collapsed, bridge collapsed, unauthorized construction, and if you have to defend your client, perhaps you have the knowledge, you have to have a knowledge much more than an engineer, then only you can defend, otherwise no. If you have a case of medical negligence, doctors committed some negligence, hospital committed some medical negligence, you got a relief to your client, then definitely I believe that one has to have the knowledge more than a doctor, then only you can succeed in the court, otherwise no. Likewise for the financial mismanagement, bungling, etc., better than the CA. And that is why the word learned is associated with the advocate, because you have to have the knowledge of all the fields in the world, but no other profession or no other field is required the knowledge of law except the lawyers. That is why the learned is there with you. Another beauty of this profession is this, that there is no age to become a gazetted officer for this profession except lawyer. Everyone, every field, everywhere, you will have a limited lifespan for the becoming a gazetted officer, as for 30 years, 32 years. The day you complete your LLB degree and you are enrolled with the Bar Council and in the state, you becomes the officer of the court. No engineer become the officer engineer, no doctor become the officer, no CA become the officers, but the moment you are an advocate, you are an enrolled advocate, you are the officer of the court. And then up to 30 years in the some state, up to 32 years, you can become a gazetted officer in the lower judiciary. Then up to the age of somewhere 35 or 40 years in the higher judiciary. Then if you are not getting a chance there, trying again, up to the age of 60 years you can go to the High Court and become a gazetted officer. And if not, then keep trying. Up to the age of 65 years, you can get a chance to be elevated direct to the Supreme Court and become the best gazetted officer. That's the beauty of this profession, and except this, no other profession has that. And the right of equality, the day you become a registered advocate, very same day you are equal with the very eminent lawyers in the country. I don't want to say that he becomes the equally knowledgeable, but he gets the equal opportunity. Next day he can go to the Supreme Court and can argue about it, argue the case. Right from the SDM court to Supreme Court, the day you are enrolled, you can go and you can be equated. On the other side, the most honorable, as the lawyers legends, if Ramjet Milani Saab is there, and tomorrow, if after retirement our honorable judges are also there, so the one person who is having only one day standing can argue on the other side by equating
So the best example of the equality is in this profession and in no other profession. And with due respect to our honorable judges, I will always say the moment from our classes, our fraternity, they becomes the judges, they becomes honorable. And after their retirement also, they are coming back to this fraternity only. So we the lawyers are the generation of the judges. We send them on deputation, and after deputation, again they come back to this profession. So that's why I, with due respect to the honorable judges, says that the lawyer's profession is even chosen by the retired judges also. So this is the beauty of this profession, and we love this profession for this reason. I have seen the theme of Constitution, and the most one was the equality and equal opportunity. I am just a traditional person. I'd like to say, go to your ancient system. Forget time being about this Constitution. I'll say that in our ancient system, which we called Sanatan Dharma, there was right of equality, equal opportunity for everyone. Few examples I'll try to quote. And if we follow that system, we will be the best person to follow the Constitution. You see, Maharshi Valmiki never want to say where he was born, what was the caste, what was not the caste, nobody asked. He was having such, rather I'll like say, कितना ऊंचा कद रहा होगा, जहां माता सीता भी गई और अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने पढ़ाया और भगवान के ही भाइयों को हरा दिया. तो दैट वाज द ब्यूटी कि जहां पे राइट ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात थी. संत रविदास, संत कबीरदास, इस तरह के एक नहीं कितने सारे एग्जाम्पल हमारे देश में हुए, तो जहां पे हमेशा कहीं डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कि क्या कास्ट है, किसी ने नहीं पूछा. चाणक्य ने कभी नहीं पूछा चंद्रगुप्त की जाति क्या थी, कहां से उठाया और सम्राट बना दिया, जिसने भारत को किस ऊंचाइयों पे पहुंचाया. तो हम इक्वलिटी की जो आज बात करते हैं, तो अपने एंशियंट सिस्टम को देखिए, वहां पे इक्वलिटी ही इक्वलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वलिटी है. वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी में बढ़ने का भगवान, आप ये देखिए कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कौशिक जी एक क्षत्रिय धर्म में पैदा होने के बाद ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं. तो वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी थी. इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट ऑफ इक्वलिटी इज देयर इन आवर एंशिएंट सिस्टम. तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जस्ट फॉलो दैट and you will be then the best follower for our constitution, and it will be the greater respect for the constitution. So able person can always rise to anything. अब यहाँ पे बात आती है कि हम सब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पीटर्स एकेडमी इसके लिए, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे गुरु और शिष्य का रिश्ता है. अगर आप गुरु के लिए सम्मान रखते हैं तो आपको कुछ भी अदर सोचने की जरूरत नहीं है. बिलीव इन योर गुरु. गुरु की जिम्मेदारी है कि वो आपको कैसे आगे बढ़ाएगा. और गुरु की महिमा अगर आप ये देखें, हमारे साहित्यों में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, सबसे ऊपर गुरु को रखा है. उसके बाद भी तुलसीदास जी ने अगर हनुमान चालीसा लिखी तो सबसे पहला शब्द लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार. तो गुरु के चरणों की रज को ही अपने सिर पे रख के वो आगे चले, तब उनको ज्ञान प्राप्त है, तब वहां से उनकी बात. उसके आगे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए. तो हमारे यहाँ अगर हम गुरु का सम्मान करते हैं तो परमात्मा से, भगवान से मिलने का रास्ता भी केवल गुरु ही बताता है. सब गुरु की महिमा तो इतनी है कि कहते हैं सब धरती कागज करें लेख निसब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए. तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपको केवल ये बताता हूं कि मोस्ट ऑफ अस आर द स्टूडेंट्स. सम्मान करो गुरु का और कीर्ति प्राप्त करो अपनी.
गुरु हमेशा समभाव से विद द इक्वल साइट्स वो सबको डिलीवर करता है। इसमें अगर एक स्टूडेंट क्लास में फेल हो जाए तो उसमें गुरु को कभी दोष नहीं दिया जा सकता। समभाव से भगवान इंद्रदेव वर्षा करते हैं और आपके पास जितना बड़ा कंटेनर होगा उतना ही आप उससे प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए हैवी रेन, इफ यू हैव ए कंटेनर ऑफ 1 liter, you will only store 1 liter of water and rest entire water will go waste. If you have a container of 50 liters, then you can store 50. If you have a pond, you can store millions of gallons of water, but if you have nothing, then you will be having nothing. So likewise, a teacher always gives knowledge to all students equally, but it is up to you how much you can gather it from it. To improve your container, enlarge your container to receive it, and that only you can get it by giving the respect to your teachers, and he will tell you how to do it. That is why I always say कि यहाँ से भी गुरु में ही रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिख के टीचर बन, सपोज टीचर ने पढ़ाया, टीचर तो अगले साल भी उसी क्लास को पढ़ाएंगे, तीसरे साल भी उसी क्लास को पढ़ाएंगे। टीचर्स बिकम हैप्पी व्हेन द स्टूडेंट सक्सीड्स। हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि माता पिता और टीचर, ये ही दो ऐसे इंसान हैं जो अपने पुत्रों से, अपनी संतान से या अपने शिष्य से हारने के बाद प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे हमारे साहित्य में देखिए, अर्जुन भी हमेशा कभी नहीं कहते कि मैं पांडु पुत्र हूं, सारे संवाद में यही कहते हैं हम द्रोण शिष्य अर्जुन। और द्रोण भी हमेशा ये खुश होते हैं कि मेरा पुत्र भी मेरा शिष्य इतना अच्छा नहीं था जितने अर्जुन थे। तो अगर गुरु का सम्मान करना है, गुरु की बात करनी है, गुरु को सम्मान देना है, उसमें आपका फायदा है, गुरु का उसमें कभी फायदा नहीं होगा। आप जितना उनका सम्मान करेंगे, वो प्रसन्न होंगे, उतनी ही ज्यादा फिर आपको मेहनत करके आपको पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा देने की आपको बात करेंगे। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, कहना भी अच्छा लगता है, बट टाइम लिमिट्स आर ऑलवेज देयर। बिफोर माई कमिंग टू द डैश आई वॉज टोल्ड दैट द टाइम कंस्ट्रेंट्स आर देयर, सो आई विल confine myself to this, and by giving a special thanks to the Peters Academy who has given me this opportunity and this respect of coming here. Thank you very much. So nice of you. Thank you.